किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में आप सबको हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हिजम राजेन, दिल्ली मेथी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की तरफ से। मेरा बाएं तरफ मेरा बहन यनमिला सदांग एक स्कॉलर है जी। मेरा दाहिने तरफ जो है डॉक्टर आर के चौहान, मेरा राइट साइड में है डॉक्टर बेंजामिन रोंगमई, मेरा लेफ्ट साइड में है मिस्टर बीरमणि सनस, हमारा डीएमसीसी के एक स्पोक्स पर्सन वुमेन की तरफ से जो है लेलिना नागा। मैं आज प्रेस वार्ता में आपको इसलिए आपको बुलाया गया था कि मणिपुर में पिछले कई सालों से यानी कि 2003 से जो है जो लगातार जो हिंसा जो चले जो आ रहे हैं उसके बारे में कुछ घटनाएं जो बहुत जघन्य अपराध जो है घटे। मैं डीएमसीसी के तरफ से और मेरा जो साथ जो बैठे हैं इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर की तरफ से, हम वी द नागा और मेइतेई पीपल जो है हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का जो है कुछ दिन पहले यहाँ पर जो कुकी जो काउंसिल की तरफ से कुछ प्रेस वार्ता भी हुआ था, हम उसको भी जवाब देने के लिए हम आपके सामने बैठे हैं। मेरा कर्तव्य ये रहेगा कि आपके सवालों के जवाब भी मैं जिम्मेदारी से जो है जो है आपको जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। और जो मेरा जो दाहिने तरफ जो बैठे जो डॉक्टर साहब है और डॉक्टर साहब जो डॉक्टर रोंगमई साहब और यनमला सदांग जो है आपको अंग्रेजी में प्रेस आपके साथ जो रूबरू होंगे। मैं हिंदी में आपको मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी कमेटी की तरफ से इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर की तरफ से और दिल्ली मेइतेई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की तरफ से एक मेइतेई ऑर्गेनाइजेशन और नागा ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें हम ईमानदारी से आपके सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, ये हमारा कमेटी की तरफ से। धन्यवाद। Good afternoon, dear members of the press, distinguished guests, respected civil society leaders, and my fellow citizens. I stand before you today not merely a PhD researcher scholar, but as a daughter of Manipur, a daughter of this world, on behalf of Indigenous Peoples Forum Manipur, a citizen of India, and a representation of the Naga community. I stand here carrying the collective grief of countless families whose lives have been irreversibly altered by conflict, difference, and uncertainty. Today I speak not from a place of anger, but from a place of conscience. I speak not to defend division, but to speak to the constitutional morality upon which our republic was founded. Above all, I speak because silence in the face of suffering is itself a form of injustice. For more than 2 years, Manipur has remained trapped in a cycle of violence, displacement, fear, and mistrust. Behind every statistic is a family. Behind every headline is a mother waiting for her child, a father mourning a son, and children growing up without the security that every citizen of this nation deserves. The measure of a democracy is not merely how it governs in times of peace, but how faithfully it protects the people during times of crisis. Today, I extend my deepest condolence to every innocent victim of this conflict, Naka, Meitei, Kuki, and every other community. Every innocent life possesses equal dignity. Human suffering has no ethnicity, and justice must never have one. Justice for 6 Naka civilians. Our hearts remain with the families of the Naga civilians whose lives were brutally taken and whose bodies were recovered near Leilon Vaiphei on June 10, 2026.
The organizer's statement describes the bodies were recovered near Leilon Vaiphei on June 10, 2026, and the killings exceptionally brutal and notes that the identified suspects remain at large despite the passage of time. The pain of these families cannot simply be measured in statistics or official reports. It is measured by empty chairs at dinner tables, unfinished dreams, and lifelong trauma. The organizers also point to a painful humanitarian contrast. The 14 Kuki individuals were released by members of the Naga community on humanitarian ground, while 6 Naga hostages were later found dead after alleged torture and mutilation. Survivor testimonies cited in the statement describe several trauma among those who survived. The weight of these families cannot simply be measured in statistics or official reports. If these accounts were established through due process, they represent only crimes against individuals, but profound violations of human dignity. Justice delays, justice denied, as we all know, and justice denied, and justice delays also justice diminished. We therefore urge the Government of India and the Government of Manipur to ensure that every identified suspect is apprehended, every investigation proceeds impartiality, and every prosecution is transparent, independent, and time-bound. No citizen shall ever feel that justice depends upon ethnicity, geography, and political circumstance. Equal justice must protect equal protection. As Nagas, we do not seek justice exclusively for one community. We seek justice for every innocent victim. We mourn every Naga life lost. We mourn every Meitei Syrian who has suffered. We acknowledge the suffering experienced by civilians of these communities. Justice cannot be selective. Compassion cannot be selective. The Constitution cannot be selective. Article 14 of the Constitution guarantees equality before the law. Article 21 guarantees every citizen the right to life and personal liberty. These are not abstract constitutional promises, these are solemn obligations. A constitutional democracy loses its moral authority when any citizen begins to doubt whether these guarantees apply equally. Rebuilding public confidence, the organizers have called for the immediate abrogation of the suspension of operation agreement, arguing that it has failed to achieve its intended objective of lasting peace and that it has instead contributed to continued insecurity. Whether through review, reform, or other lawful action, the Government of India should carefully evaluate whether existing security arrangements continue to serve the interests of peace, constitutional order, and public confidence. No peace framework should lose sight of the people if we are intended to protect. A peace agreement that no longer commands public confidence requires careful reassessment. The highest objective must always remain the restoration of law, dignity, and security for every citizen. Recent violence in Kanto, as you all know, in the memorandum submission, it is highlighted. The organizers have condemned the burning of Meitei at Kanto Sabal near Limakong and raised concerns regarding the security response to the incident. Every attack on innocent civilians must be investigated thoroughly, regardless of who the victims are. No home shall be burned, no family should live in fear. Considering responsibility, the organizers further
expressed concerns that the prolonged violence has resulted in significant loss of life and displacement, and cautioned whether the constitutional responsibility to restore peace has been adequately fulfilled. I wanted to caution the accountability and effectiveness of this system. These concerns deserve careful consideration. The Constitution does not distinguish between citizens on the basis of ethnicity. Its protection is universal. Governance is ultimately measured not by political declarations, but by the life experience of ordinary citizens. The question before is simple. Can every citizen of Manipur live without fear? Until the answer becomes yes, our collective responsibility remains unfinished. Because the laws are meant to protect the weak as much as protect the strong. And restoring institutional trust. We demand restoring institutional trust. No democracy can survive indefinitely without public trust. History repeatedly teaches us that society fractures only because of violence, not only because of violence, but because citizens lost confidence in the impartiality of institutions. Trust cannot be demanded. Trust must be earned through transparency, accountability, and equal treatment before the law. Whenever concerns arise regarding the impartial application of security measures, they must be examined independently and transparently. Public confidence grows where institutions are seen to act fairly toward every community. And as we all know, that history demands us that divide and rule was a colonial strategy that to bring mistrust and division. Lasting peace in Manipur cannot be built on distrust. If Manipur is an integral part of India, every policy must strengthen unity, equality, and public confidence rather than deepening existing divisions. Divide and rule policy, we all know, is a colonial policy. And divide and rule policy creates trust deficit. The mushrooming of insurgency is also a consequence of divide and rule policy, as we all know, which bred trust deficit. This is also one of the reasons why Subhash Chandra Bose raised INA against the British rule. If India considers Manipur as a part of India, divide and rule policy, which breeds trust deficit towards Manipur, should be revised urgently. The sanctity of democracy must be protected and retained with no malice towards any. Hypothetically, if an outlaw or a spouse of an outlaw is given a chair in democracy, the rising trust deficit is unlikely to go down or stop. As an academic researcher, I firmly believe that lasting peace cannot be achieved solely through security response. Conflict is only solved through knowledge, institutions, and inclusive policy making. The future of Manipur requires policy solutions informed by the life realities of its own people. Research institutions are not luxuries. They are instruments of peace. I would like to also point out that districts such as Ukhrul, Gamchong, Dengapur, and Chantil continue to face significant and educational challenges, including limited access to postgraduate education, the establishment of universities, research centers, public policy institutes, and higher educational policy recommendations and opportunities for young people to become partners in peace rather than inheritors of conflict. When policy is reformed by local scholarship, dialogue becomes more meaningful. When opportunity is distributed fairly, trust begins to grow.
I would also like to highlight these points. Democracy must inspire confidence. The strength of Indian democracy rests not merely upon elections, but upon public confidence in democratic institutions. Every appointment to public office should reinforce the confidence. Citizens must believe that those entrusted with public responsibility uphold the Constitution, respect the rule of law, and serve all communities impartially. Only then democracy can be entering legitimacy and appeal to the government of India. Today, we respectfully appeal to the government of India, restore public confidence through transparent governance, ensure impartial investigation into every violence, strengthen constitutional institutions, protect every citizen equally, support long-term educational and research infrastructure out to Manipur, engage all stakeholders in meaningful dialogue, reviewing existing security and peace arrangements to determine whether they continue to serve the objective of lasting peace. Above all, ensure that every citizen experiences the equal protection promised by the Constitution of India. And I would like to a few things to re-emphasize on that to guests present here today. While power sharing seems like a necessity, it needs to be balanced and tampered with an appropriate mechanism of democratic accountability. Otherwise, more life will be lost as the mobilization on divisive fault lines may continue in Manipur. The issue of legitimacy needs to be rationalized primarily. The hypothetical question raised above for the position of political executive for lasting peace and stability, not just for short-term peace. And we must unequivocally understand there's a nexus between militants of SO and the murder of 6 Naga civilians. Hence, application of suspension of operation is a prerequisite to restore civility in Manipur. And the armed agencies should not make Manipur their battleground to prove their competencies rather than contribute to the confidence of the civil citizens. And lastly, but not least, the center and state must work out a channel to listen to the local communities and take responsibility for their security. History will be remembered not only what happened in Manipur, but how India responded. Nations become stronger not by ignoring difficult truths, but by confronting them with courage, justice, and constitutional wisdom. Our appeal today is neither political nor communal. It is constitutional. It is constitutional. It is humanitarian. It is profoundly Indian. Let justice prevail over impunity. Let truth prevail over fear. Let constitutional morality prevail over mistrust. Let compassion prevail over hatred. And let the people of Manipur once again believe that the Constitution protects every citizen equally. We ask not for privilege, we ask not for vengeance, we ask for justice. Justice that is impartial, justice that is timely, justice that restores faith. Because peace without justice is merely silence, but justice with equality becomes the foundation of lasting peace. Thank you. Protection of suspension of Operation SO groups raises serious constitutional questions. As upheld by the Honorable Supreme Court in matters relating to the use of armed civilian groups in Chhattisgarh, the state cannot arm or support one community against another. The unwavering tolerance of Kuki militant violence under the suspension of Operation framework represents a clear violation of this principle.
The state has a fundamental duty under the Constitution to protect all citizens equally, not to provide cover to armed groups that attack unarmed civilians, women, and children. Thank you. Has already briefed the details of this press conference. As a social activist from the soil of Manipur, I would like to also put my perspective across. Few days back, the Kuki executive members have given a press conference in this very hall. But today we have come here to give our version of the story. A story is never complete without hearing both sides. Ever since Manipur was in bloodshed and conflict 2023, it carried on till 2026. Till date, the indigenous people of Manipur are still crying for justice, crying for peace. There are mothers and children whose smiles, whose peace of minds are broken. But still, although we are part of India, sometimes we feel we are being left out because of the biased attitude from the government of India and the incapable leadership of the state of Manipur. We have seen the outbreak of this Kuki Naga conflict since Feb 2026. Ever since the violence broke out, there has been a lot of discrepancies. There have been a lot of judiciary as well as administrative instability in the state of Manipur. In Naga, the Naga community in the state of Manipur has been abiding principles and values. We have been so much following the values of humanitarians. On 13th of May, when 18 Nagas were taken hostage by the group of Kukis in Leilon Vaiphei village, they handed over the hostages to the Kuki terrorists. We never thought that they were so ill-treated in such inhuman way. Out of 18 of them, 12 were released. Among them were mothers. And 6, we never knew whereabouts of them. And on 14, as the mothers were released, they were told, they shared with us the unforgettable and so horrific stories that they were blindfolded, they were taken to jungles, and 6 of them were killed and they heard the gunshots. Yes, the Nagas remained silent, but the silence is not weakness. Every issue and problems need to have a logical conclusion. Peace cannot be a shallow. Well, since the Nagas were not happy, we detained 14 Kukis in Sanapati headquarters. This was not a sign of revenge, but the unhappiness of Nagas being captured by the Kukis and handed over to the Kuki terrorists. The 14 Kukis who were taken as, not as hostages, but they were detained because of our unpleasure. They were kept in the best facilities that we could imagine. They were given food, a place to rest, even talab, suparis, everything was provided as they demanded. And yet, the Kukis, they mercilessly butchered, killed, chopped, mutilated, dismembered our Naga 6 brothers. Therefore, Indian citizens, it's time to recall justice that is given within the framework of the Constitution should be applicable for all, without any discrimination. So, all of you are aware that on request of the government of India and government of Manipur, the 14 hostages who were in the hands of the Nagas were released on 9th. And then, according to their promises, on 10th, 6 Nagas bodies also were released by them, but we never got their lives back. When we look at this whole episode and sequences, we find there's a biased treatment towards certain communities and certain favoritism towards certain communities. I think the Constitution of India and the law that is in place
needs to be treated equally to everyone, every citizen living in India. Now the Nagas demand fast-track processing of the law. Justice needs to be delivered to the families of the 6 victims. Till today, the mothers and the victimized families are in Jenems, in Far. Till today, we have not taken back the dead bodies of these 6 who were killed in a most inhuman manner. Their bodies are still lying down. We are waiting and demanding for justice. If Indian government thinks seriously that the justice has to be delivered, the security Indian forces who are deployed in the state of Manipur needs to act upon. We have a very clear statement by the Kuki Naga Council in one of their press release that they have admitted and they asked pardon that the 6 Nagas were killed out of emotion and mistake. Killing off or taking off a human life cannot be done out of emotion or mistakes. These evidence are very clear in the social media, in the press. The government of India needs to really come up and then act upon and deliver justice to our people at the earliest time possible. Then only the broken smiles of the people who are victimized can be restored. There can be peace in every village and in the state of Manipur. Otherwise, the community will keep on demanding for justice, and the youth who are there in the society witnessing all this violence will still be encouraged to take up weapons and join insurgent groups. To stop this, we demand that the government of India and government of Manipur need to act now and delay no further. इसको हिंदी में रूपांतर या हिंदी में अनुवाद ये मेरा जिम्मेदारी है। मैं आज दिल्ली मेटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी और इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर की तरफ से मैं हिंदी में मैं इसको अनुवाद कर लेता हूँ। पिछले कुछ 10 जून 2026 को 6 नागा व्यक्ति को अपहरण करके उनको बहुत जघन्य तरीके से उनका जो है हत्या किया गया। उनकी हत्या जो है बिल्कुल जो है पीस यानी कि अलग अलग उसके कितने टुकड़े करके उनको उनके परिवारों को वापस किया। लेकिन उसकी काउंटर पे जो 14 लोगों के जो अपहरण किया था उधर से, लेकिन उनको सुरक्षित तरीके से उनको वापस किया गया था। जो 6 नागा जो परिवार का जो लोगों को जो हत्या किया गया था, उनकी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था कुकी काउंसिल का 13 जुलाई 2026 को। उन्होंने अपनी जो गलतियां जो है उसको एक्सेप्ट किया था। उनका कहना यह कि ये भावनाओं में उनकी हत्या किया गया, लेकिन भावनाओं का कोई जगह नहीं होता मानवीय इतिहास में। आज तक कोई भावनाओं में कि किसी की हत्या करके उसके जो अलग अलग टुकड़े करना किसी मानवीय इतिहास में किसी भी पृथ्वी का किसी भी जगह पर आज तक कोई इतिहास कभी हुआ नहीं है। ये एक जघन्य अपराध है, इसको जघन्य अपराध की तरह मानना चाहिए और इसकी कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलना चाहिए। और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और नोट्स उन्होंने जो कहा है कि जो अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये मणिपुर पीपल जो इंडिजिनस पीपल फोरम और DMCC दिल्ली मेटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की तरफ से इसको हम जो है सिरे तरह से हम नकारते हैं, क्योंकि मणिपुर की जो इंटीग्रिटी जो है उसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। मणिपुर इंटैक्ट है, इंटैक्ट ही रहना चाहिए। पिछले कई जो 2023 से जो है आज तक जो है अलग अलग जो मणिपुर को 3 तरीके से जो है उसको जैसे बफर जोन की तरह उसको बनाया गया। ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस मणिपुर में पांव रखने की जगह नहीं है। एक आदमी के बराबर की जो 2 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मणिपुर पुलिस और असम राइफल BSF कौन सा CRPF अलग अलग किस्म की जो फोर्सेस वहाँ पर मणिपुर में डिप्लॉयड है, वहाँ पर तैनात है। लेकिन मणिपुर के सिक्योरिटी को एक गारंटी देना मुनासिब नहीं समझा, ये मणिपुर के लोगों का ये कहना है। इसमें जो है मैतेई और जो इवन कुकी लोगों का भी उनका भी डिमांड है जो मणिपुर में पीस यानी कि शांति बहाल होना चाहिए। और जो कुकी जो के साथ जो
जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द इसको जो है निरस्त कर देना चाहिए। ये जो अगस्त 2005 को जो है इनके जो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद एक एग्रीमेंट को रिव्यू किया था, लेकिन एक 2 तरफा एग्रीमेंट रिव्यू हुआ था, 3 तरफा ने। स्टेट गवर्नमेंट के जो है उसमें बिना इजाज़त के जो है वो भारत सरकार ने उसको कुकी जो के साथ जो है उनकी एग्रीमेंट जो है एक्सटेंड किया गया था। ये एक्सटेंड को जो है इमीडिएटली निरस्त यानी कि तुरंत निरस्त करने का मैतेई और नागा की तरफ से इसको मांग किया जाता है। ये सीरीज ऑफ जो ऑफेंस जो अपराध जो है, जिरीबाम में जो है एक 8 महीने का बच्चा, उसको भी जो है जिस तरीके से जो हत्या किया गया, उनकी आंखें निकला गया, उनको जो टुकड़े टुकड़े करके मारा गया, ये मानवीय इतिहास में जो बहुत जघन्य अपराध है, हम इसको मानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये उनकी जिम्मेदारी को लेना चाहिए और उनको जो है तुरंत जो उनको सजा, जिस तरीके से जो भारत के जो कानून के हिसाब से जो उनको सजा मिलना चाहिए। नागा पीपल नागा कम्युनिटी और मीतेई कम्युनिटी के आज की जो है हम जो डिमांड है, जो अलग अलग रिमोट एरिया में जो है बफर जोन की तरह एक जगह से जो दूसरी जगह यानी कि इस तरफ जो कांगपोकी जो डिस्ट्रिक्ट है, ये बिल्कुल जो है एक बफर जोन की तरह एक कन्फाइंड लोगों को जो आने जाने में इतने दिक्कत हो रहा है, तो ये जो तुरंत जो है भारत सरकार इसको संज्ञान ले करके इसको अपने तरीके से जो सरकार जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान जिस तरीके से जो कानून कहता है उस तरीके से उधर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना हम डिमांड करते हैं। 11 जुलाई 2026 को जो है कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट के नाम से आते हैं सबल कांत जगह पर, तो वहाँ पर जो है 6 मैतेई परिवार के जो घर को जलाया जाता है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। ये जो है क्या सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से क्या मंसूबा लेकर के उनको जो अलाउ किया गया, और जो अपने घर को जो बचाना चाह रहा था उनको भी उन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको वहां जाने से रोका गया। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है भारत सरकार को, और उन सिक्योरिटी फोर्सेस को किसकी इशारा था, किसकी हुक्म था, किसने ऑर्डर दिया उनको जो वहां पर जो है तमाशा देखने का। ये बहुत जघन्य अपराध है। उससे अच्छा, दूसरा 57 माउंटेन डिवीजन के पास में से 50 से 100 मीटर की दूर में से एक मैतेई उनका नाम है कमला बाबू, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज तक उनकी खोजबीन भारत सरकार ने, वो कहाँ जीवित है या जिंदा है या किस तरह वो है, या उनका कम से कम बॉडी तो, या अगर उनके शहीद हो गया या मर गया तो उनका कम से कम मृतक शरीर तो कम से कम उनके परिवारों को हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के, क्रिश्चियन धर्म की उनकी जो आखिरी जो उनके धार्मिक तरीके से जो अपने रीति रिवाज की जो होना चाहिए उसको कम से कम उनके बॉडी को जो है हैंड ओवर करना चाहिए। ये भी बहुत जघन्य अपराध है। अभी जो कुकी जो का जो 13 जुलाई 2026 को, उसमें उन्होंने अपनी गलतियां जो है उसको गलतियां को इग्नोर यानी कि इग्नोरेंट तरीके से, यानी कि उसको दरकिनार रखते हुए अपनी गलती तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अपनी गलती तो माना है, लेकिन उसका साथ साथ उस गलती को किस तरीके से प्रेजेंटेशन, किस तरीके से उनकी भावना जो लोगों के सामने जो रखा, ये बहुत एक निंदनीय है। उनकी जो आखिरी नोट्स में जो है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो मांग करना, ये इसको हम गलत मानते हैं। जो मणिपुर के जो आम जनता जो है उनका जो डिमांड जो है, उनके जो मांग इमीडिएटली जो है तुरंत जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है इसको निरस्त हो जाना चाहिए। कंप्लीट डिसमेंटल, यानी कि किसी भी समुदाय की हो जो हथियार के साथ, हथियार पकड़ना किसी सिविलियन के काम नहीं है, ये ऑथराइज फौज जो सेंट्रल फोर्सेस है या पुलिस है उनका काम है। हथियार डिसआर्म, कोई भी कम्युनिटी का हो उनका डिसआर्म होना चाहिए। इमीडिएट रिस्टोरेशन, यानी कि तुरंत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ लॉ स्टेट पे जो है लागू होना चाहिए,
और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भारत सरकार इस जो गलतियां जो आज तक हुई हैं, जो वहाँ पर जो अपराध हुए हैं, इनके जिम्मेदारी जो है चीफ मिनिस्टर और मणिपुर के गवर्नर, भारत सरकार, उनकी जिम्मेदारी अकाउंटेबल होना चाहिए। उधर जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो डिप्लॉयड है, ये मेरा नहीं कहना, मेरा निजी राय नहीं है, लोगों का कहना है, ये एक तरफा प्यार है उनका, एक तरफा जो उनकी कई सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस, उनकी सोशल मीडिया, उनकी जो कुकी जो कम्युनिटी के साथ उनकी संबंध जो है देखा गया है। ये मेरा कहना नहीं है, वहाँ के लोगों की कहना है। तो इसके लिए दूसरा चीज़, जो 6 नागा जो परिवार की जो उनकी हत्या और मैतेई परिवार की जो हत्या है, उनको तुरंत जो है इन्वेस्टिगेशन NIA से करवाना, किस से करवाना, भारत सरकार की जो एक विश्वसनीय जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके उनकी जो सजा यातना, यानी कि जो कानून के हिसाब से उनको सजा दिलवाना, ये हमारा मांग है। और पीस इन मणिपुर, यानी कि मणिपुर पे शांति पहले की तरह आना चाहिए, ये हर समुदाय की तरफ से ये मांग है। सिर्फ कुकी या नागा या मीतेई की तरफ से नहीं, इवन कुकी की तरफ से भी जो है, उनकी तरफ से भी मुझे ऐसे लगता है, कुकी में भी बहुत सारे जो समुदाय हैं, अलग अलग समुदाय एक दूसरे को, उनका भी जो है थोड़ा सा मानना ना मानना ये उनके वो है। तो मणिपुर में खास करके जो है लोगों का जो जीना, जो डे टू डे लाइफ में जो है बहुत दिक्कतें, जो प्राइस राइज, अब दिल्ली में जो है कॉकरोच जनता पार्टी का जो है एक कुछ मांग पे जो है आपने लाठी चलवा दी। ये लाठी चलवाना, उसके बाद जो पुलिस के जो बर्बरता से लोगों के प्रदर्शनकारियों के साथ जो बिहेव करना, ये मणिपुर में तो आम बात हो गई है। और ये चीज ये चीज़ें जो है ये बहुत आम बात है मणिपुर में। लेकिन अब तो तुरंत जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग जो है उसको जो है रिएक्ट कर रहे हैं। प्रेस और जो बड़े जो मीडिया जो है मणिपुर में जो हो रहा, पिछले 3 साल से जो हो रहा है, ये कभी अपने मीडिया पे जो है प्रमुख तौर से जो है कभी दिखाया नहीं है। इसमें हिंदू मुसलमान और जो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट, आपके दिल्ली में जो पानी नहीं आता तो BBC में आ जाता है, लेकिन मणिपुर में लोगों 60 से 70 हज़ार लोग जो है बेघर है, कमन कमरे में, यानी कि जो है बैरक्स में, जैसे मिलिट्री के बैरक्स होता है, स्कूलों में जो है वो पनाह ले रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो महिलाएं जो है, एडोलेसेंट बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वहाँ पर डिलीवरी हो रहा है, वहाँ पर जो महिलाएं जो है वहाँ कमन रूम शेयर हो रहा है। आप तो कम से कम 5 BHK, 3 BHK, 4 BHK के आप मतलब अपेक्षा करते हो, वहाँ पर जो जिस तरीके से जो रह रहा है वो बहुत भयंकर एक ह्यूमन लाइफ में जो है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो है नाइजीरिया में भी ऐसे नहीं होता होगा। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है इसको तुरंत निरस्त होना चाहिए, ये मणिपुर के प्रथम मांग है। और जो शांति बहाल होना चाहिए, ये मांग है। आप सोच के रूह कांपोगे, मणिपुर में जो एक्सटोर्शन है, कुकी जो की तरफ से जो एक्सटोर्शन है, जैसे आप इधर से दिमापुर से आप आगे इम्फाल की तरफ कूच करोगे, उसमें कम से कम 50 जो है जो टोल बूथ उन्होंने लीगलाइज तरीके से बना करके रखा। सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं उनको जो है निरस्त करना। इस तरफ जो है जिरीबाम से लेकर के इम्फाल की तरफ जब जाओगे, आप कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर भी देखा, करीब 24,000 रुपये की टैक्स लिया गया, अलग अलग टैक्स। यहाँ पर जो है उन्होंने जो बूथ बना रखा है, टोल टैक्स का बूथ बना रखा है। तो वहाँ पर जो है डे टू डे की जो कमोडिटीज, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, उसका कीमत कहाँ पहुँचेगा, आपको कभी अनुमान लगाया है सोशल मीडिया या किसी भारत की मीडिया ने, या नरेंद्र मोदी साहब ने कभी इसके अनुमान लगाया है? वहाँ पेट्रोल की कीमत किस तरीके से कहाँ तक आसमान छूरे होंगे, प्याज, लहसुन, जो चावल की कीमत कहाँ किस रेट पे बिक रहा होगा, गैस की कीमत कितना होंगे, कभी अनुमान लगाया है? मैं भारत की जनता और मीडिया को मैं इसको प्रश्न को आप लोगों के पास छोड़ देता हूँ। और दूसरा चीज़, मणिपुर के पास जो इम्फाल वैली में जो है वो रह रहे, वो इम्फाल वैली में ही कन्फाइंड है, वो
असम या अपनी पड़ोस जो है नागा के जो घर पे भी जाने के जो है उनको अलाउ नहीं है। एक किस्म के जो है मणिपुर को 3 किस्म की बफर जोन बनाया गया, नागा अपनी जगह पर, मेइतेई अपनी जगह पर, कुकी को अपनी जगह। ये जो है बिल्कुल ये बफर जोन हटवाना चाहिए। ये सिक्योरिटी फोर्स का ड्यूटी है या भारत सरकार की ड्यूटी है, ये वो जाने। दूसरा, जो आने जाने के साधन जो है मात्र फ्लाइट यानी कि हवाई जहाज से आना जाना मणिपुर की जो इम्फाल वैली में है, तो मणिपुर दिल्ली से जो इम्फाल की जो फ्लाइट की जो किराए जो है, अगर आप सुनोगे अब या क्या ये कोई मजाक कर रहा है क्या आप कहोगे, 30,000, कभी कभी 40,000, 20,000, 10,000 से नीचे जो है कोई फ्लाइट की कोई कीमत नहीं। अब यहाँ से गोवा जाओगे 5,000 6,000 रुपये में जाओ, अब इधर से इम्फाल जाओगे 20-25 हजार रुपये में। कोई गरीब परिवार से कोई बीमार, क्योंकि इम्फाल में कोई अच्छे अस्पताल या कोई स्कूल कॉलेज या कोई अच्छे संस्थान जो शिक्षा के संस्थान इम्फाल में नहीं है, उनको दिल्ली, बेंगलोर या गुवाहाटी आना पड़ता है। तो उनके जो गरीब परिवार के लोग हैं, क्या उनको पढ़ने का हक नहीं है? अब जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो दिल्ली में जो है अपनी शिक्षा के लेकर के, शिक्षा के प्रॉब्लम को लेकर के यहाँ पर जो है प्रदर्शन जो चल रहा है, मणिपुर में पिछले 3 साल से जो है शिक्षा बिल्कुल कोलैप्स्ड है। वहाँ जो बच्चे जो है अब जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है, यूपीएससी का फॉर्म भरना है, कॉलेज के जो फॉर्म भरना है, पीएचडी का फॉर्म भरना है, वहाँ इंटरनेट जो सबसे ज्यादा पृथ्वी में, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन मणिपुर और जम्मू कश्मीर है। तो उन बच्चों के बारे में जो है कभी इस कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सोचा होगा या हमारा मीडिया ने कभी सोचा होगा, हमारा जो होम मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कभी सोचा है? ये जिम्मेदारी जो है भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो है मिस्टर खेमचांद और गवर्नर को लेना चाहिए। मैं आज की प्रेस वार्ता मैं यहाँ पर मैं अपनी तरफ से जो मैं समाप्त करना चाहूँगा, और जो अब की जो प्रश्नों का जो उत्तर जो है मैं सटीक तरीके से देने का मैं प्रयास करूँगा और ये मेरी जिम्मेदारी रहेंगे। धन्यवाद।